Today we start aromatic acids, its physical and chemical properties and their chemical reactions. First comes on physical properties. Aromatic acids generally colorless solids होते हैं. Practically all aromatic acids are insoluble in water. Benzoic acids are slightly soluble in water but more soluble in hot water, alcohol, etc. The boiling point of aromatic acids are high. This is due to the following reason: because the OH bond is more polarized because of the presence of electron attracting carbonyl group in the adjacent position, and it exists as a cyclic dimers, and the melting point of carboxylic acids are also generally high. ये कॉलरलेस सॉलिड्स होते हैं, ज़्यादातर ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में बट स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, मोर सॉल्युबल होते हैं हॉट वाटर, अल्कोहल एक्सेट्रा. बॉइलिंग पॉइंट एरोमेटिक एसिड्स का हाई होता है बिकॉज दिस इज ड्यू टू द OH बॉन्ड इज मोर पोलराइज्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस, मतलब कि जो OH बॉन्ड है वो पोलराइज्ड हो जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग कार्बोनाइल ग्रुप जो कि एडजेसेंट पोजीशन पे प्रेजेंट होता है. वो क्या करता है, पोलराइज कर देता है OH बॉन्ड को. एग्जिस्ट करते हैं एज इन फॉर्म ऑफ साइक्लिक डाइमर्स व्हेन it boils, and the melting point of aromatic acids are generally high. Second point is next comes to chemical properties of aromatic acids. The molecule of aromatic acids contain two groups. First one is benzene nucleus, second one is carboxylic group. Hence, the chemical reaction of aromatic acids are due to these groups are of following types. Molecule aromatic acid के दो groups contain करते हैं. First one is benzene nucleus and second one is carboxyl group. जो केमिकल रिएक्शन एरोमेटिक एसिड्स की वो दो ड्यू टू दीज ग्रुप्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स. सिर्फ दो ग्रुप्स की वजह से ही केमिकल रिएक्शन होती है. रिएक्शन ऑफ COH ग्रुप दैट इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड रिएक्शंस ड्यू टू बेंजीन रिंग. दो टाइप्स की, दैट इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप और बेंजीन की वजह से जो रिएक्शंस होती हैं वही एरोमेटिक एसिड्स की रिएक्शंस होती हैं मेनली. फर्स्ट वन इज द रिएक्शंस ऑफ COH ग्रुप दैट इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप. First one is salt formation. When benzoic acid react with sodium hydroxide or sodium bicarbonate, it forms sodium benzonate with sodium hydroxide and also with sodium bicarbonate, and it also forms sodium benzonate. इन दिस क्या हो रहा है कि जो सॉल्ट फॉर्मेशन है, फर्स्ट वन मैंने कहा कि ये रिएक्शन हो रही है ऑफ COH ग्रुप. सिर्फ रिएक्शन होगी COH ग्रुप, कोई भी चेंजेस होंगे COH ग्रुप में होंगे. जब हमने इसे NaOH या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम बाइकार्बोनेट से इसे रिएक्ट करवाया, इट ऑलवेज गिव सोडियम बेंजोनेट, and in NaOH it gives sodium benzoate plus water, but in bicarbonate it gives sodium benzonate plus carbon dioxide plus water. Next one is ester formation. It reacts with alcohol in the presence of concentrated sulphuric acid catalyst to form esters. ठीक है, जब benzoic acid react करता है अल्कोहल के साथ in the presence of sulphuric acid, it always give their product in the form of esters, and it gives ethyl benzoate plus water. ठीक है. Next one is acyl halide formation. Benzoic acid react with the phosphorus pentachloride or thionyl chloride to form benzoyl chloride. जब benzoic acid react करता है with phosphorus pentachloride or thionyl chloride, it gives benzoyl chloride. But in PCl5 it gives benzoyl chloride plus POCl3 plus HCl. But in thionyl chloride it gives SO2 plus HCl. Next one is the reduction to the benzyl alcohol. Benzoic acids undergo reduction with lithium aluminium hydride, that is act as a reducing agent, and when benzoic acid reacts with lithium aluminium hydride, it reduce
the benzoic acid into benzyl alcohol. That acid converts into a form of alcohol, that it is due to the reducing agents. इसमें क्या हो रहा है कि बेंजोइक एसिड जब हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इसे रिएक्ट करवाएंगे, ये क्या देगा, अल्कोहल. इसमें एसिड जो प्रेजेंट है, दैट इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप दैट इज अटैच्ड ऑन द बेंजीन रिंग, इट वो इसमें उसमें रिडक्शन होगी, इट कन्वर्ट्स इनटू द बेंजाइल अल्कोहल. फर्स्ट नेक्स्ट है decarboxylation. When heated with the soda lime, benzoic acid loses a molecule of carbon dioxide to yield benzene. जब हम इसे for बेंजोइक एसिड को हीट करेंगे विद सोडा लाइम विद COA या फिर NaOH से हीट करेंगे, इट गिव्स lose a molecules of the benzoic acid यानी lose a molecule of carbon dioxide. यहाँ से सी डबल बॉन्ड ओ यहाँ से निकल जाएगा और H डायरेक्टली अटैच्ड हो जाएगा. बेंजीन, इट गिव्स बेंजीन प्लस कैल्शियम कार्बोनेट. इन दिस वे that's why they called as decarboxylation, कि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रुप रिलीज हो जाएगा और इट गिव्स बेंजीन प्लस कैल्शियम कार्बोनेट. And in this first that is the reactions of COH group. First one, we told you about the salt formation. First one is a benzoic acid. Benzoic acid act as an acid, and NaOH and sodium bicarbonate is a base. That's why they form salt. That's why they called as a salt formation. ठीक है, जब एसिड और कोई भी बेस रिएक्ट करता है वो सॉल्ट देता है, एज वी ऑल नो अबाउट दैट, कि जब एसिड बेस की इट इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ठीक है, इसमें सोडियम बेंजोनेट और दोनों में सोडियम बेंजोनेट, बट इन NaOH इट गिव्स वाटर, बट इन सोडियम बाइकार्बोनेट इट गिव्स सोडियम बेंजोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. Second one is ester formation. When benzoic acid reacts with alcohol in the presence of concentrated sulphuric acid, it gives esters. In acyl halide formation, it gives with PCl5 or phosphorus pentachloride and thionyl chloride, it gives benzoyl chloride as a product. And fourth one is the reduction to benzoyl alcohol. When benzoic acid reacts with the lithium aluminium hydride, it is a strong reducing agent. It reduces the carboxylic group into the alcohol. That's why the benzoic acid converts into the benzyl alcohol with the use of lithium aluminium hydride. Last one is a decarboxylation. जब हम इसकी decarboxylation, इसके नाम से पता चल रहा है कि व्हाट इज मीन कि decarboxylation मतलब कि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रुप निकलेगा. ठीक है, जब हम इसे हीट करेंगे विद सोडा लाइम, जब यहाँ से C डबल बॉन्ड O CO2 रिलीज होगा, ये क्या चेंज कर देगा इसे बेंजीन प्लस कैल्शियम कार्बोनेट में. नेक्स्ट वन इज ए रिएक्शंस ड्यू टू द बेंजीन रिंग्स. अब रिएक्शंस हो रही हैं ड्यू टू द benzene ring. First one is a electrophilic substitution. Benzene ring of benzoic acid undergoes the usual electrophilic substitution reactions. अब कोई भी changes COH group में नहीं आएंगे, अब changes आएंगे benzene ring में, because these are the reaction that is due to the benzene ring. अब benzene ring ज़्यादातर undergo करती है usual electrophilic substitution reaction. अब जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई, तो जब बेंजोइक एसिड रिएक्ट किया HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इट गिव्स नाइट्रोबेंजोइक एसिड. It gives nitrobenzoic acid. And the next one is the special reactions. First one is the courteous reaction. In this reaction, aromatic acid is converted into the primary aromatic amine containing one carbon less than acid. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि जो एरोमेटिक एसिड है वो कन्वर्ट हो जा रहा है विद एरोमेटिक अमीन, दैट कंटेनिंग एरोमेटिक अमीन कंटेनिंग वन कार्बन लेस देन एसिड. इसमें क्या हो रहा है कि देखो, जब एरोमेटिक एसिड जब इसे थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाया, इट गिव्स एसाइल एजाइड. अब इसमें से -N2 निकल गया, तो it gives alkyl isocyanide, and after this it gives primary aromatic amine, and this primary aromatic amine is
containing one carbon less than acid. As we know, यहाँ कितने carbons है? R, that is CH3. R is also known as the uh, alkyl group or aryl group. If R is equal to aryl group, that's why they called as aromatic acid. R is equal to aryl group. तो इसमें कितने कार्बन प्रेजेंट है aromatic acids में? 7 carbon present है, but in a primary aromatic amine it is only contain 6 carbon, that is primary aromatic containing 1 carbon less than acid. That's why they are known as courteous. This reaction is known as courteous reaction. Second one is Schimdt reaction. Aromatic acids, when react with hydrozoic acid in the presence of sulphuric acid, it gives primary amine. जब benzoic acid react करेगा with hydrozoic acid in the presence of sulphuric acid, it gives primary amine plus carbon dioxide plus N2. Okay. Uses. Benzoic acid is used as a germicide in medicine for urinary infection and in vapor form for disinfecting bronchial tubes. It is also used as a food preservatives. Sodium benzoate, that is sodium benzoate, that is prepared from reaction of salt formation, that is reaction of a COH group. Benzoic acid reacts with NaOH and sodium bicarbonate, it gives a sodium benzoate. That's why it is used as a food preservative for preserving pickles, tomato ketchups and fruit juices.